Hello folks, so in this video, in this lab, we are going to implement Cloud SQL. So what Cloud SQL is basically is, Cloud SQL is fully managed service of either MySQL, PostgreSQL or Microsoft SQL Server database. It provides many features such as patches and updates automatically applied. It has administer MySQL users. It supports many clients such as gCloud App Engine, Google Workplace Script, application and tools. So basically in this lab we are going to perform to create a Cloud SQL database which will also use in further projects that you can make and configure a virtual machine to run a proxy, create a connection between the application and Cloud SQL. This is the main thing that you can do with this Cloud SQL. You can create a connection between an application that you want to make and a database, that is Cloud SQL, and connect an application to Cloud SQL using private IP address. So let me set up the things till. So what Cloud SQL services provides? It provides replica services, backup services, import, export, scaling, up and out. So replica service means that it replicates data between multiple zones. Okay, so now see what our task 1 is. Task 1 is to create a Cloud SQL database. So I'll go here and maybe and continue. Now on the navigation menu, click SQL, create instance, choose MySQL. In the navigation menu, I'm searching for SQL. So here it is. I'm pinning this at the top. So whenever I need this thing, I can, and then so these are the database engine that Cloud SQL provide. MySQL, PostgreSQL, SQL Server. So we are going to select MySQL and then specify these following things: WordPress database DB. So root password, I am giving it password subs. Let me take S capital, subscribe, and region is US Central 1. It's here default. Zone any, multiple zone, and version is MySQL 5.7. So there's a note that the password will be used later steps. So the password was subscribe. Expands for configuration. So here I expand this, and here you can see what options are: customize your instance, machine type. So in the machine type, and so we are going to expand machine type. Here you can see which machine type do you want to use. The right amount, provision the right amount of vCPU to choose machine type and click the button. Have few points. Each vCPU is subject to 250 MB per second network throughout cap of peak performance.
standard select then select. Here we are going to select standard and one CPU, and for the next storage type and storage capacity, a few points. The SSD is the best choice for most use case. HDD offers lower performance, so you can use SSD instead of HDD. Delete each of the capacity options to use and reset options to 10 GB. So here I am using 10 GB and SSD is recommended. And then expand the connection section. Here select private IP and the network select default. In the setup and click the setup button appears. In the panel to the right, click enable API. And then use an automatically allocated IP range. And then continue and create connection. And then we are going to it is creating. Till then it will not work, so let it create, then we will check our progress. So basically choosing a connection type to your Cloud SQL instance will influence how secure, performant and automated it will be. If you are connected in an application that is hosted within the same Google Cloud project as your Cloud SQL instance and it is co-located in the same region, choosing the private IP connection will provide you with the most performant and secure connection using private connectivity. That's why we use here private IP. And in other words, if I say traffic is never exposed to the public internet. So now it is created and now I will check my progress. It still, you might have to wait and becomes clickable. And then click instance this step. So it is creating my database with those features that have been selected. Still says no because it is taking time to create itself. Let me refresh the page. Still takes. If you want to know how much your progress is going on, you can see here in notification and it is uploading. It will take 1 minute 11 सेकेंड. साइड में जाके कंट्रोल W दबाया था, Ctrl+W. उसके बाद ना सर्च के लिए ऑप्शन आ जाता है
कीवर्ड सर्च कर सकते हो तुम। अगर हाँ मैं उसको पता नहीं कौन कौन सी दवा मैं उसमें जा वो दवाया था, दवाई होती है लेकिन वो चली नहीं रही थी, पता नहीं। ये 3 बार गई थी। कौन सी? ये वाली किन्ने? 2 बार भी नहीं उड़ा था। मैं तो यार भाई ये तो हो जाएगी भाई, तो 1 बार हो गई मेरी वाली मेरी तो मेरी वो वाली लैब 40 मिनट के अंदर हो गई थी, मतलब 40 इतना टाइम नहीं था उस लैब ने मेरा। यार वो फोटो वगैरह ढूंढने में टाइम लगा, फोटो में वो एक्सेस तक आईडी तक जाने में टाइम लगा था, वरना तो बिल्कुल नहीं होगा हाँ तो उसमें। और तू टाइम तो यार तू वहीं पे गड़बड़ खा गया ना, तूने उसमें टाइम लगाया सर्च करने में। मैंने नीचे नीचे सर्च करने में मैंने करा था, मैंने मैन्युअली सर्च करा था, नीचे लगा। हाँ तो मैं कीवर्ड उससे सर्च करा था, कीवर्ड से। कीवर्ड तो हो ही जाता जल्दी। भाई बहुत ही बेकार लैब थी वो, मैं इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में। अबे लैब का फायदा क्या है? हैं? कुछ भी नहीं बट जो भी हमें स्टेप बनाना आ गया, पीपीजी क्लाउड बनाना आ गया, मुझे पता लग गया कहाँ कहाँ से क्या हो सकता है बस। अरे मुझे तो कुछ नहीं ये हमें आया। स्टेप जो है सब कैसे भी बनवा लो, ये हमें स्टेप बनवा लो कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे से अभी हम स्टेप बनाए दूंगा, अभी हम स्टेप वीएम बनवाएंगे। इंस्टेंस बनाने में क्या, कंप्यूटर में क्या क्या बना दो, क्रिएट इंस्टेंस। हाँ और पहले पहले जो स्टेप ग्रुप तो वही का बन जाएगा और वो वही का बनवा लो। यार कह रहा वीएम फिर इंस्टेंस बना। स्टेप वीएम इंस्टेंस होता क्या है? कुछ भी पीपीजी नेटवर्क में भी कुछ नहीं है ना, उसमें फायरवॉल रूल लगाना है, अब तो बनाने में तो कुछ भी नहीं है। बनाने अबे जब क्लाउड ये क्लाउड कंसोल से तो सब हो ही जाएगा आराम से। कंट्रोल में तो ही था। मैंने तो उससे दिक्कत आई यार, कमांड करना रहता, लेकिन कमांड में भी उन्होंने दे रखा है ऑप्शन नीचे कंसोल में ही कि कमांड जनरेट कर दो, नहीं तो एपीआई भी जनरेट कर दो यार इस तरह। एपीआई कैसे बनाते हैं यार? एपीआई बनाना सीखना है। एपीआई भाई उसके लिए वो या उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो चेक होना है, या वायर सिंगेट या फिर मेरे बनता है वो एक एपीआई तो लैब करवाई भी आगे करवाई, वो चेक ऑन करवाई उन्होंने, और नहीं तो फिर वो टेराफॉर्म और ये करवाने चाहिए, मतलब अलग लैंग्वेज है कोई, जिंगेट जिंगेट मतलब क्या, जिंगेट से करवाई उन्होंने। अच्छा। एपीआई की करवाई थी, लेकिन उसमें एपीआई में अगर मैं खोया कि डायरेक्ट वो डाल लो, कोड कोड कर लो हार्ड कोड, अपन वो चला दो।
In this part, WordPress is downloading and set up its things. Uh, Here we are going to install WordPress in our cloud system. Uh, so when you are creating a website, you can use uh, when you are creating a dynamic website, you can use Cloud SQL as a database to manage and to store the data. When you are creating website through WordPress or any other uh, thing, when you are going to publish your website to Cloud SQL, you can give it a site title name, the whatever you want to know, and install WordPress. Here you can fill the data as per your choice when you are creating a real object, in not in the quick lab. So now it will take some time, and it will create this thing. Hello world, welcome to WordPress. Means it will create a site which will consist this thing. Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it. Then start it. So now it cannot be reached. But if you want to do this thing again, you can do it. Now if you want to connect Cloud SQL View internal IP, then we can go into navigation menu SQL WordPress DB. Then note the private IP address. It will be referred to SQL private IP. On the navigation menu, click Compute Engine. Copy the external IP address WordPress basically. So you can locally install the WordPress. If you have done, please comment down that I know these things. And thanks you for being here and watching the video till last. Thank you.